So let us see the next question. You don't have to write anything. First of all, let me explain you. From following data, compute value of call option. Value of the call option का मतलब है call premium. And value of the put option उसका मतलब है put premium. Using Black-Scholes Option Pricing Model. That is using the Black-Scholes Option Pricing Model. Stock price of the security, that is the spot price, is given as 27. Strike price or exercise price is given as 25. Time period up to expiration is 6 months. Risk-free rate of interest is 6%. And stock return variance is 0.11. Please go through the question, all of you. So information is provided to us like this, that spot price of the equity share is 27. Exercise price of the option is 25. The time period of expiration is provided to us as 6 months. Risk-free rate of interest is 6%. यहां तक का कोई भी डिटेल्स ऐसा नहीं है कि जो हमने पहली बार सुना हो. हमको पता ही है इन सब के बारे में. स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर क्या है, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सपायरी क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. एक नया इंफॉर्मेशन आया है, स्टॉक रिटर्न वेरिएंस, दैट इज 0.11. सो वी अंडरस्टैंड इट से जब भी हमको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, then in that case we are required to apply Black-Scholes model of option valuation. Friends, हमने समझा है अभी तक the premium calculation using the binomial method, जिसमें डेल्टा हेजिंग मेथड हमने समझा, रिस्क न्यूट्रल मेथड हमने समझा, मिनिमम कॉल प्रीमियम, मिनिमम पुट प्रीमियम समझा. Then we have understood the calculation of the premium using the put call parity theorem. Put call parity theorem. अभी हम लोग और एक मेथड समझ रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम. डियर स्टूडेंट्स, वी कैन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड कि बाइनोमियल मेथड जब हम लोग कर रहे थे ना, तभी हमेशा एक ऐसा तो रहता ही है कि जो दो प्राइसेस दे रखा है वो बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है. वी अंडरस्टैंड दैट से द स्टॉक मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होता है और 3 महीने का तो टाइम पीरियड इतना लंबा है इन विच से द प्राइसेस कैन हैव एनी वेरिएशन. बिल्कुल ही हम लोग समझ सकते हैं दैट से 3 महीने में पूरा का पूरा से सिचुएशन चेंज हो सकता है. इन दैट केस मेकिंग assumption that say one of the two prices will be there or using them we are making the calculation of the premium was of course not something which was logical. We understand that say वही का वही एक हम लोग ऐसा समझ सकते हैं that is the limitation of the binomial method. Now to overcome the same we are having say the Black-Scholes model of the premium calculation. Friends, practically all over the world जहां पे भी प्रीमियम कैलकुलेशन आज की तारीख में होता है वो सिर्फ और सिर्फ Black-Scholes मॉडल जो 1973 में इन्वेंट किया गया था वो आज की तारीख में भी यूज होता है. Everywhere in the world, so the premium amount is calculated so using the Black-Scholes model only, which was invented by Professor Black and Professor Scholes in the year 1973. तो यहां पे प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट से हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कॉल प्रीमियम, और उसके बाद हम लोग समझेंगे दैट से हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द पुट प्रीमियम. Everybody is requested to just pay attention that say how to make the calculation of answer. मैं आपको समझाता हूं. यहां पे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर.
रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। इन दिस क्वेश्चन ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, however it may happen that this step would be applicable in a situation wherein the dividend information is given to us, यानी कि कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है से ड्यूरिंग दिस 6 months टाइम पीरियड। अगर ऐसा दे रखा है then in that case we are required to apply the step number 1, जिसमें जैसे कि हम लोग समझते हैं कि स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में डिविडेंड का इफेक्ट हमेशा होता ही है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड हम लोग कंप्यूट करेंगे और उसका इफेक्ट हम लोग स्पॉट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी से निकाल देंगे। सो रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल बी फाउंड एज स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। स्पॉट प्राइस कितना है, हमारे एग्जांपल में स्पॉट प्राइस है 27 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड। अगर हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है तो दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड, और यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड डिडक्ट करके विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। यहां पे नहीं है इसलिए हम लोग ये स्टेप को यहीं छोड़ देते हैं। However, how to use it that we are going to understand in the subsequent questions. फिर स्टेप नंबर 2 में we will make the calculation of e raised to negative rf into t. That is what we are required to calculate. इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं, ये क्या बताता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। e raised to rf कितना है, rf is 0.06 और टाइम पीरियड कितना है 6 महीना। So it is e raised to 0.03. That is the way we'll compute the e factor. Now understand carefully what I am going to speak. Let us assume that say you are investing an amount of rupees 100 today for a time period of 1 year and the rate of interest is 10%. I want you to write in the chat box what would be the maturity amount of deposit after 1 year. After 1 year, the maturity amount of the deposit will be 110. Simple 100 into 1.10. Suppose 100 rupees is invested today at 10% for 1 year, and let us say that the interest is semi-annually compounding. Let us assume that it is semi-annually compounding. I want you to tell me what would be the maturity amount of deposit after 1 year. So we understand that in that case it is 100 into 1 plus I rate of interest 10% divided by 2 raised to 2, that is 110.25. We understand that say if at all the compounding is done for more than once in a year, then in that case we have say this kind of the formula to be applied, wherein we understand that say the effect of the internal compounding will come when you apply this formula. Now instead of semi-annually, suppose the interest is say going to be received on quarterly compounded basis. If at all the interest is going to be received on quarterly compounded basis, तो क्या होगा? Then in that case 1 plus again I is 10% divided by 4. Why? Because 1 year is consisting of 4 quarters raised to 4. That is the way we'll make the calculation of the future value factor. Now suppose the interest is not semi-annually compounding or quarterly compounding, suppose it is on monthly compounded basis. तो क्या होगा? We understand that say ये जो divided by 4 है ना, उसकी जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे divided by 12 हो जाएगा और यहाँ पे raised to 12 हो जाएगा।
Suppose the interest is compounded not on monthly basis, suppose it is compounded on weekly basis, तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा, यहाँ पे रेस टू 52 हो जाएगा. Suppose the interest is compounded not on weekly basis but it is on daily basis, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में 365 और यहाँ पे रेस टू में भी 365. सपोज डेली की जगह आर्ली होता है, एवरी आवर, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 24 इंटू 24. एवरी मिनट तो क्या होगा, इंटू 60 इंटू 60. एवरी सेकेंड तो क्या होगा, इंटू 60 इंटू 60. दिस इज द वे वी विल हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर उससे भी ज्यादा कंपाउंडिंग होता है ना, तो उसको बोला जाता है द कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. उससे भी ज्यादा अगर होता है ना, तो उसको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोला जाता है. और यहां पे जब हम लोग ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, वी आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग स्लैश डिस्काउंटिंग फैक्टर. ये यहां पे हमने जो e रेस टू नेगेटिव आर एफ इंटू टी किया है, इसका मतलब ये है लेट्स से हम लोग सिंपल लैंग्वेज में 3% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं. सर डिस्काउंटिंग ऐसा कैसे पता चला, ये जो नेगेटिव साइन होता है ना फ्रेंड्स, वो डिस्काउंटिंग बताता है, और यही का यही अगर पॉजिटिव साइन है ना, तो वो कंपाउंडिंग बताता है. व्हाट यू कैन सी फ्रेंड्स, यू कैन सी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे x है, यहाँ पे e रेस टू पॉजिटिव x है, और यहाँ पे e रेस टू नेगेटिव x. मैं आपको कुछ वैल्यूज बताता हूं, उससे आपको ज्यादा आइडिया आएगा. जैसे कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर मैंने आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 1 साल के लिए, तो वो 1 रुपया कितना होगा, 1 रुपया 10 पैसे. पर यहाँ पे आप देखो दैट 1 रुपी बिकम्स 1.1052. क्यों, क्योंकि हमको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है. दूसरा 25%, उसमें देखो अगर मैं आज 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं एट 25% फॉर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद क्या होगा, 1 रुपया 25 पैसे होगा. पर यहां पे क्या हो रहा है, 1.284 हो रहा है. यानी इसका मतलब ये है दैट से वी आर हैविंग द कंपाउंडेड वैल्यू मोर देन व्हाट वी थिंक ऑन द यूजुअल टर्म्स. ना जैसे कंपाउंडेड वैल्यू ज्यादा होगा, वैसे उसका डिस्काउंटेड वैल्यू कम होगा. तो देखो ये e रेस टू नेगेटिव x क्या बताता है फ्रेंड्स, इट इज इंडिकेटिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो फ्रेंड्स, इट इज कंपाउंडिंग फैक्टर यानी c, दिस इज d यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर. जैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर हम लोग करते हैं तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इट इज 0.9091. और देखो यहां पे हमको जो दे रखा है वो 0.9091 से कम दे रखा होगा. तो 0.10 है, उसमें आपको थर्ड रो देखने, दैट इज से थर्ड कॉलम देखने का है, और थर्ड कॉलम देखो 0.9091 से कम है. 25% का फर्स्ट ईयर फैक्टर 80 पैसे होता है, 1 डिवाइड बाय 1.25. उसकी जगह देखो यहाँ पे 0.7788 है. तो वैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेट करना है e रेस टू 0.03. वो क्या होगा फ्रेंड्स, 0.97045. ये हमारा स्टेप नंबर 2 का आंसर है. चलो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट, whenever information is given about standard deviation or variance, comma, at that time we have to apply Black-Scholes model
for premium calculation. Second point, using B and S model, we can find only call premium. Full stop. For put premium, we will use PCPT, put call parity theorem. तो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल अप्लाई करके हम लोग सिर्फ कॉल प्रीमियम ही फाइंड कर सकते हैं। पुट प्रीमियम फाइंड करने के लिए हमको पुट कॉल पैरिटी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। Following steps are to be followed. For premium calculation, तुमको कुछ इस हिसाब से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ revised spot price of equity share. Full stop. In that write down, in this question, this step is not applicable. Full stop. It would be applicable if dividend information is given in the question. Full stop. उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। Revised spot price is equal to given spot price minus dividend per share into e raised to negative rf into t। जो भी हमको स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर दे रखा है उसमें से ये डिविडेंड पर शेयर इनटू ई रेज टू नेगेटिव आरएफ इनटू टी को हम लोग डिडक्ट करेंगे, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड। E stands for continuous compounding slash discounting factor। और फ्रेंड्स यहां पे हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली ऐसा समझ सकते हैं, ये जो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल है वो ऐसा कंसीडर करता है
द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी का प्राइस हर सेकंड में ही बदलेगा। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से एक सेकंड में भी बहुत सारे कोटेशंस कांस्टेंटली वो प्राइस के ऊपर आते रहते हैं। सो इट इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज। दैट इज द रीजन से दे आर यूजिंग द ई फैक्टर ओवर हियर। RF stands for risk-free rate of interest. And T stands for time period of dividend. ये फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि हमारा जो ऑप्शन का पीरियड है वो 6 महीना है और डिविडेंड हमको 3 महीने बाद पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे T 3 महीना लिया जाएगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ e raised to negative RF into T। उस पर लिखो e raised to negative RF into T is discounting factor। ये क्यों किया जाता है वो भी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, बट दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो e raised to negative RF into T, e raised to 0.06 into 6 divided by 12, e raised to negative 0.03, and the answer is 0.97045। This is the way it is calculated. With paragraph write down, E factor is indicating that on continuous basis comma compounding in bracket write down e raised to x comma discounting e raised to negative x। Now again I request all of you to stop writing. Let me explain you. Dear students, for the purpose of making calculation of the call premium, we'll apply the formula like this. Value of the call is spot price of the equity share into natural logarithm of the D1 value minus exercise price of the option into natural logarithm of the D2 value into e raised to negative RF into T. This is what's the formula that we have. This is what we understand is the value of the call, that is call premium. Spot price of the equity share, I think it is provided to us as 27, and this is the exercise price, I think it is provided as 25. E raised to negative RF into T, we already have found it 0.97045. Now these are the two values that we are supposed to find, ND1 and this is considered to be ND2. ND1 is considered to be a kind of hedge ratio and ND2 is considered to be the probability of option being exercised. Now how it is calculated? I am explaining ND1 first of all. Dear students, ND1 is calculated based on the D1 value. How to find D1 value, I am explaining that to you, but for the time being, let us say the D1 value is 0.48. For example, it is 0.48. Now, whatever the value of the D1 that we compute,
How to compute, I'm coming to that point, but that we compute afterwards. Say we will locate the same, say, into Z table, because it is the value of the normal probability distribution table. I request all of you to refer the table number 4. How to read other tables, I'll come to that later on. For the timing, I have made an assumption that, say, let us say the D1 value is 0.48. So we will read it like this: 0.4, okay, so 0.0, sorry, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. So this is 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48. This is the way you will be having, so the Z table reading of the normal probability distribution table. It is 0.1844. So for the D1 we will be reading the Z table value, so it is 0.1844, and based on that, so the ND1 is calculated. ND1 will be found as 0.50 plus 0.1844, that comes to 0.6844. This is similar to the hedge ratio that we understand. So over here we understand that, say, a kind of bell-shaped curve diagram like this, in which exactly the middle is indicating 0.50, that is the mean value. So we have started over here, say, for valuation, that is calculation of ND1, we start with 0.5. Now value of the D1 is positive, value of the D1 is positive, so basically we are interested in this entire area, that is 0.5 plus this area. So the Z table reading will be added to 0.5 to make the calculation of ND1, which is 0.6844, which will be used for calculation of the call premium. And suppose by chance the D1 value is negative 0.48. If it is negative, then in that case, of course, its reading is not going to change. However, so the ND1 value is definitely going to change. What we have to do, friends, we are required to subtract Z table reading of D1 from 0.5. So in that case, it will be 0.3156. This is what we understand. Because in that case, basically, we are interested in this area. This is the way the ND1 is calculated. The exercise price as it is. As far as the ND2 is concerned, dear students, ND2 is calculated exactly the same as ND1. The only difference is that instead of D1, you are required to take the reading of the D2 to make the calculation of ND2. तो ND1 और ND2 का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है. तो अभी D1 का कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूं. As far as the D1 calculation is concerned, D1 is calculated as natural logarithm of spot divided by exercise plus RF plus variance divided by 2 into time period whole divided by under root of time period into standard deviation. This is the simple formula that we have for D1. It is natural logarithm of spot divided by exercise plus RF plus variance divided by 2 whole into time period whole divided by under root of time period into standard deviation. How to make calculation of the D2? I'll explain that slightly later on. Now RF हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 0.06. वेरियंस क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 0.11. 2 तो सिर्फ एक वैल्यू है. T is the time period और T का वैल्यू क्या किया जाता है पता है फ्रेंड्स? T का वैल्यू लिया जाएगा 6 divided by 12 यानी कि 0.5.
जो भी टाइम पीरियड ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन का दे रखा है, दैट डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इज द वैल्यू ऑफ द टी, divided by the under root of the time period, that is under root of 0.5 into standard deviation, that is under root of 0.11. तो आप लोग समझ सकते हो कि ये सारा कैलकुलेशन, दैट इज वैल्यूज रखना डिफिकल्ट नहीं है। हावेवर से ये एक पॉइंट है तो हमारे लिए थोड़ा सा नया है, दैट इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ s डिवाइड बाय e. सो हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ s डिवाइड बाय e, वो अभी हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। तो देखो हमारा स्टेप नंबर 2 यहां पे खत्म हो गया। अभी हम लोग स्टेप नंबर 3 करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपको ये समझाया, विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस, और उसके बाद लाइक बाकी का सीक्वेंस तो बहुत सिंपल है, D1 करो, ND1 करो, D2 कैसे किया जाएगा वो भी आपको समझा देता हूं एज एंड व्हेन द टाइम कम्स। सो स्टेप नंबर 3, calculation of D1, sorry, calculation of ln s divided by e. फ्रेंड्स ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, s का मतलब है स्पॉट प्राइस और e का मतलब एक्सरसाइज प्राइस। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो समझते हैं। There are 4 steps in which we can calculate the same. Don't write anything, let me explain you. It will be calculated like this. सबसे पहले spot divided by exercise. Spot price कितना है 27, exercise price कितना है 25. So we understand that say 27 upon 25, 1.08, तो यहां पे लिखेंगे 1.080। फिर फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रिव्यू द 10 बेस लॉग टेबल, वी कैन रीड 10 बेस लॉग टेबल। देखो मैंने क्या बोला, 10 बेस लॉग टेबल, तो ऑफकोर्स वो टेबल जो है वो 10 से शुरू होगा। सो उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 10, 8 और 0 का मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस 0 का 0 ही होता है। सो 10 बेस लॉग टेबल रीड करना है, दैट इज 0334, सो इट इज 0334। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव द बार वन प्रोसीजर। बार वन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। बार वन कुछ इस हिसाब से किया जाएगा, we have to see that there are how many digits before decimal, that is 1 digit before decimal. So 1 minus 0 is 0, so 0.0334, यानी 0.10 बेस लॉग टेबल रीडिंग ऐसा किया जाएगा। सपोज बाय चांस ऐसा हो नहीं सकता है, पर सपोज कि ये है फॉर एग्जाम्पल 11.23 फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। 11.2 यानी 0.0492, 23 लिखा था मैंने, तो 3 का मीन डिफरेंस 1, 2 and 3, that is 11. So 0.492 plus 11, that is 0.503। ऐसा करके 10 बेस लॉग टेबल का रीडिंग होगा। और बार वन प्रोसीजर में क्या होगा, देयर आर 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, सो 2 minus 1, तो यहां पे 1 लिखेंगे, 1.0503 ऐसा किया जाएगा। This is the way we are supposed to have the by one procedure. उसके बाद we will be having last
आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज ln s डिवाइड बाय e कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ln s डिवाइड बाय e का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा, स्टेप नंबर सी जो भी है सी स्टेप में इंटू 2.303, यानी क्या होगा फ्रेंड्स 0.0334 इंटू 2.303। ये 2.303 फिक्स्ड वैल्यू है टू कन्वर्ट this 10 base log table value to natural logarithm value. So 0.0334 into 2.303, that comes to 0.0769202। ऐसा करके हमको ln s डिवाइड बाय e कैलकुलेट करना है। राइट ऑन द आंसर। So friends, this is the way you can make the calculation। और ये जो आंसर है ना, हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। It is like this 1.080, then you do under root for 12 times। जो भी आंसर आता है उसमें से एक डिडक्ट करो, जो भी आंसर आता है उसको 4096 से मल्टीप्लाई करो। This is what you can do। So we understand that over here 1.08 क्या करने का फ्रेंड्स, अंडर रूट फॉर 12 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी आंसर आता है उसमें से एक डिडक्ट किया जाएगा। ये जो भी आंसर आया इनटू 4096, you get the answer which is very near to this 0.07696, ठीक है, 0.07696 1764। और जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 7692 है। 0.0769 तक तो सेम ही है, फिर फर्क आता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड मेथड बाय विच यू कैन मेक द कैलकुलेशन। सो राइट ऑन दिस आंसर, आंसर तो यही रहेगा डेफिनेटली। स्टेप नंबर 3, आई एम सॉरी, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ D1। राइट ऑन आंसर, ln s divided by e plus rf plus variance divided by 2 whole into time period t divided by under root of time period into standard deviation। So try to compute the D1 value on your own। See, ln s divided by e is what we have found is we are taking this value 0.0769202 plus risk-free rate of interest 0.06 plus variance 0.11 divided by 2 whole into time period, it is 6 divided by 12 whole divided by under root of the time period, that is under root of 6 divided by 12 into standard deviation, that is under root of 0.11। ऐसा करके इसका आंसर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि कुछ ऐसा कीजिए आप लोग 0.11 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इट से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को प्रेफरेंस मिलेगा, प्लस 0.06, यानी ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.115 into 6 by 12 is 0.5 of course,
डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 12 इज 0.5, 0.5 का अंडर रूट, सो 0.7071, 0.11 का अंडर रूट 0.3317. This value won't change. It is 0.076920. 0.115 into 0.5, यानी ये वाला वैल्यू आ गया 0.0575 प्लस 0.0769202, so 0.1344202 whole divided by 0.7071 into 0.3317, so 0.2345. बस खत्म हो गया. 1344202 divided by 0.2345, so 0.5732. इतना सब कुछ बताने का जरूरत नहीं है, बट ये इनिशियल क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया. अदरवाइज यूजुअली आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यूजुअली आप सबसे पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करके उसको क्या करो, मेमोरी प्लस में डाल दो, यानी कि 0.5 का अंडर रूट, 0.11 का अंडर रूट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसको मेमोरी में डाल दिया, दैट इज 0.2345. फिर आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करो, 0.11 डिवाइडेड बाय 2, सो 0.055 प्लस 0.06, 0.115 इंटू 0.5, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये वाला पूरा वैल्यू 0.0575 प्लस 0.0769202, तो आपका न्यूमरेटर आ गया 0.1344 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, क्योंकि वो वाला वैल्यू मेमोरी में पड़ा हुआ है. कौन सा, ये वाला वैल्यू, पर यहाँ पे मेरे को पूरा समझाना था इसलिए मैंने किया. चलो राइट ऑन दिस. स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ ND1. In the breakdown, ND1 is calculated after reading of Z table, comma, of D1 value, full stop. Whatever is value of D1, comma, its Z table reading will be made, full stop. Its reading will be added to 0.5 to find ND1 if D1 is positive. Full stop. With paragraph written down. Reading of Z table will be deducted from 0.5, comma, if D1 value is negative, comma, to compute ND1. तो सबसे पहले आपको Z टेबल का रीडिंग तो देखना ही देखना है. उसके बाद जो भी आपका रीडिंग है उसको 0.5 में ऐड किया जाएगा टू कंप्यूट ND1 अगर D1 पॉजिटिव है, और अगर D1 नेगेटिव है तो वही का वही रीडिंग हमको 0.5 से डिडक्ट करने का है. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड.
और देखो हमको क्या करना है 0.5732, तो उसके लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग 0.5, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58, ये दोनों रीडिंग को हम लोग लेंगे और फिर उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उन दोनों को हम लोग इंटरपोलेट कर दैट इज करेंगे, जैसे हम लोग IR करते थे वैसे ही 2157.2190, उन दोनों को अभी हम लोग इंटरपोलेट करेंगे। So we understand that it is 0.57 and 0.58, ये दोनों D1 का वैल्यू है। उसके सामने हम लोग लिखेंगे Z टेबल रीडिंग 0.2157, 0.2190। अच्छा 57 और 58 का फर्क कितना है 0.01, और उन दोनों के रीडिंग का फर्क कितना है 0.219 माइनस 2157, 0.033, I'm sorry 0.0033। तो अभी हमको क्या सोचना है, ये 0.01 से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए सामने 0.0033 से इंक्रीज हो रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको 5732 का रीडिंग चाहिए। So we understand that say we are required to have the, that is we will give the final answer like this 0.2157 लोअर वैल्यू को हमने बेस लिया प्लस 0.0032 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 0.0033, ऐसा किया जाएगा। यानी कि रीडिंग में अगर 0.01 का इंक्रीज है, D1 के वैल्यू में 0.01 का इंक्रीज है, तो Z टेबल का रीडिंग इंक्रीज होता है 0.0033 से। तो अगर D1 का वैल्यू 0.0032 से इंक्रीज होता है तो उसके सामने रीडिंग में कितना इंक्रीज होगा वो हमको फाइंड करना है। 0.0032 into 0.0033 divided by 0.01, so 0.0011 plus 2157, so 0.2168. This is the way we find the reading of D1. उसके बाद क्या किया जाएगा फ्रेंड्स इन D1, that is 0.5 plus 0.2168, और ये हमारा सिंपल आंसर आ गया 7168। किसका, ND1 का। स्टेप नंबर 5 हो गया, अभी स्टेप नंबर 6। Calculation of simple ND2, that is CD2. Write an answer along with me. Natural logarithm S divided by E same, plus RF same, वहां पे प्लस की जगह यहां पे माइनस हो जाएगा, बस हो गया खत्म। वो D1 में क्या था, प्लस था, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनटू टाइम पीरियड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ln s डिवाइड बाय e कितना है, 0.0769202 प्लस RF is 0.06 माइनस वेरिएंस 0.11 डिवाइडेड बाय 2। ये जो भी आंसर है इनटू क्या किया जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, 6 डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड, सो अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 12 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास वेरिएंस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस का अंडर रूट, तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा।
0.0769202 प्लस ये वाले कंपोनेंट को पहले सॉल्व करते हैं। 0.11 डिवाइड बाय 2 0.055, उसको डिडक्ट करो 0.06 में से, सो 0.005 इंटू 0.5, सो 0.0025। ये डिवीजन तो हमने ऑलरेडी करके रखा है, इट इज 0.2345। So 0.0769202 plus 0.0025, that is the numerator, divided by 0.2345, so 0.3387, 8678 है, इससे मैं 87 ले रहा हूं। This is the way you can compute the D2। या तो फिर हम लोग D2 का कैलकुलेशन एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स पता है? इट इज D1 माइनस अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि 0.5732 हमने ऑलरेडी करके रखा है, माइनस अंडर रूट ऑफ 0.50 6 डिवाइड बाय 12 इंटू अंडर रूट ऑफ 11, सो इट इज 0.5732 minus 0.2345, so it is 0.3387। आपको एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई भी मेथड करने का परमिशन है। स्टेप नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ ND2। फ्रेंड्स अभी ND2 का कैलकुलेशन आप करो, एंड उसके बाद आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कॉल प्रीमियम ऑल्सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, और आपका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। नाउ ND2 का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? फॉर दैट वी अंडरस्टैंड दैट से द D2 वैल्यू and again Z table reading। D2 का वैल्यू क्या लेंगे? 33 and 34, so it is 33 and 34, so it is 0.1293 and 1331, so it is 0.1293 and 0.1331। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा 0.01, and this difference is 0.0038। okay, now we understand that say जब D2 का वैल्यू 0.01 से बढ़ता है तो Z टेबल का रीडिंग 0.0038 से बढ़ता है। हमको जाना कहां पे? 0.3387 पे जाना है। तो कैसे होगा? लाइक 0.1293 प्लस 0.0038 डिवाइडेड बाय 0.01 into 0.0087, exactly the same that say we were doing say IRR 0.1293 plus 0.0033, फाइनल आंसर इज 1326। ऐसा करके वी विल बी मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द आंसर। उसके बाद ND2
0.50 plus 0.1326, 0.6326. That is the way the ND2 is calculated. Finally, we'll make the calculation of the call premium. Step number 8, calculation of call premium. It is spot into ND1 minus E into ND2 into e raised to negative RF into t. ऐसा किया जाएगा. Spot price of the equity share is 27. Multiply with ND1. जो हमने स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट किया है ND1, it is 0.7168. 0.7168 minus exercise 25 into ND2 is 0.6326 into e raised to negative RF into t is 0.97045. तो स्टेप नंबर 2 में हमने ये कैलकुलेट करके रखा है. ओके, नाउ द फाइनल आंसर इज 27 into 0.7168, that is 19.3536, minus 25 into 0.6326 into 0.97045, so 15.35, and the answer is exactly 4 rupees. तो कॉल प्रीमियम होगा 4 रुपए.